Hello everyone. Today we are going to discuss about reaction between metals and non-metals and formation of ionic bond. Before starting this topic, let us recall what is atom, molecule and ion. Atom is smallest particle of a matter is known as atom. When many atoms combine, they will form a molecule. And ion, the charged species are known as ions. An ion is a charged particle and can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called an anion and a positively charged ion is known as cation. Each element wants to have a completely filled valence shell. That is, it wants to have either 2 or 8 electrons in its outermost shell. क्लास 9th में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. I have drawn atomic structure of sodium. Centrally placed nucleus is there. Nucleus में protons और neutrons हैं. और different shells, these are known as energy shells. K, L, M, N are energy shells. In case of structure of sodium atom, K shell में 2 electrons हैं, L shell में 8 electrons हैं, M shell में 1 electron है. It means that it is nothing but electronic configuration, that is arrangement, distribution of electrons in different energy shells, that is electronic configuration. So sodium का electronic configuration क्या है? 281. outermost shell में जो electrons present हैं, that is known as valence electron. It means that the electrons present in the outermost shell is known as valence electron. और अगर outermost shell में 2 electrons present हैं या 8 electrons present हैं तो उसको हम stable atom कहेंगे. It means outermost shell is filled. Now in case of sodium, outermost shell has 1 electron, तो sodium easily 1 electron lose करके sodium atom will be converted into sodium ion. Similarly, I have drawn diagram atomic structure of chlorine. Atomic number is 17. Electronic configuration is 287. Electrons are distributed in different energy shells. outermost shell में 7 electrons हैं. इसका मतलब क्लोरीन के पास टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, गेन करने की. So, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके chlorine atom will be converted into chloride ion. And we have also studied that metals have tendency to lose electron and non-metals have tendency to gain electron. That's why metals are known as electropositive in nature and non-metals are known as electronegative in nature. Metals have a tendency to lose electron and non-metals have a tendency to gain electrons. When metals and non-metals react with each other, then both of them tries to achieve completely fixed outermost shell by transferring of electrons. Now, let us see what is this transferring of electron. This is because of new topic known as chemical bond. A chemical bond is force of attraction between atoms, ions or molecules that enable the formation of chemical compounds. The bond may result from the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions as in ionic bonds or through the sharing of electrons as in covalent bond.
सो केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं या केमिकल कंपाउंड बनाते हैं. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. वन इज आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विच इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड इज कोवलेंट बॉन्ड विच इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड कोवलेंट बॉन्ड वी विल स्टडी इन नेक्स्ट chapter, that is carbon and its compound. Now formation of ionic bond. One example is given, sodium chloride, NaCl. Na is metal and Cl is non-metal. अब हम देखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. सी सोडियम बॉन्ड फॉर्मेशन में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा. तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम भी स्टेबल बन जाएगा और इसके पास एक आयन आ जाएगा, और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन जाएगा. और नाउ सोडियम आयन इज 28 एंड क्लोराइड आयन इज 288. Sodium 1 positive charge, chlorine 1 negative charge, and they will form sodium chloride. This type of bond is known as ionic bond. So sodium and chlorine react with each other, then electrons lost by sodium Na plus is gained by chlorine Cl minus, and an ionic bond is formed between them. There is also one example given, sodium oxide. Sodium oxide में दो एटम्स सोडियम के हैं. ओके, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6. अगर ये सोडियम के दो एटम्स जो हैं, ऑक्सीजन को दो एटम्स की ज़रूरत है. एक सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, दूसरा सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा. नाउ sodium ion and oxide ion, this is again ionic bond. Okay, so there are two examples of ionic bond. In the next video we will practice more examples. Thank you.